Ladies and gentlemen, good day and welcome to Stylam Industries Limited Q3 FY24 earnings conference call hosted by Systematix Institutional Equities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ashish Poddar from Systematix Institutional Equities. Over to you, sir. Yeah, thank you, operator. Good morning, everyone. This is Ashish Poddar from Systematix Institutional Equities. We welcome you all for Stylam's Q3 FY24 earnings conference call. From the management, we have Mr. Jagdish Gupta, the Managing Director, and Mr. Kishan Nagpal, the Chief Financial Officer. Result was published last week, and we believe that you have got a chance to look at them. In the interest of time, we'll directly get into the Q&A, and we request participants to avoid repeated questions. Operator, you can start the Q&A session. Yes. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We have our first question from the line of Keshav Lahoti from HDFC Securities. Please go ahead. Hello? Hello? Yes, sir. Go ahead, sir. Hello, Mr. Dhruv. Hello? Hello. Hello? No voice. Hello, am I audible? You're not audible, Dhruv, sir. Hello? Yes, you're audible. Hello? Yeah, you actually said Keshav Lahoti, so I got confused. Okay, Mm-hmm. Yeah, no issue. Sir, so my first question was that what was the reason behind this low volume growth, especially in the domestic market where we were actually projecting close to 30 to 50% revenue growth in the near term because of the lower base, as our presence is currently very less compared to our peers. Absolutely correct. First of all, in export, there we have a almost damage of 18 to 20 crore due to this Palestine and Israel war, as we are number one in this area. This is the reason for export. Rather, we are happy that we have a growth in export. Hello? Hello? Yeah, sir. Please Yes. continue, sir. Okay, sir. What was the reason behind degrowth in domestic market? The domestic market, actually, again, I have no big reason for this. We are trying our best. Product is best, acceptability is there. We are opening a new branch offices also. But really not a correct, if I honestly, maybe it is a destiny we are waiting for. Every time that it will increase, it will increase. Unfortunately, it is not going, let's see for this quarter also. But export, definitely, it is growing in a big way and in a right way, right direction. We have many new OEM customers adding with us, very big brands of world with us. Domestic also, we are maybe, then if let's hope for this 2 months more. Otherwise, we will change our strategy, see how we can improve in domestic also. In spite of the fact we have more expenses this quarter, last quarter. Revenue down, top line is down. Even then, our margin of EBITDA is better than last year also. Right, sir. And sir, how do you see the Red Sea crisis playing out in the near future? That is a very big problem again. Now, even then, ocean freight increase in two sides, Israel plus Europe. USA not much affected. Almost 6-7 times. And our 50% customers accepted our 50% increase. But if it is this month or next month, we will pass on everything. They understand that it is a genuine problem. But it is a temporary phase.
I don't know, maybe 1, 2, 3 months, how much time it will take. Okay, sir. So how do you look at the raw material price trend in the near term, as our margins have already improved substantially? It is stable now. Okay. So do you expect this type of gross margins to be maintained? Yes. If it is going, there should not be any dramatically change, very, very high. If 2, 3, 4%, 5% increase, no matter. When our top line will increase, everything will be covered. Okay. These all expenses are not for this, meant for this sale. These all expenses are minimum 90 to 100 crore per month. If it is sale, there is no increase in any type of expenses. Got it, sir. But I am myself personally very happy that in spite of the fact these are circumstances that our margins are better than last year. Definitely, sir. That is very commendable. Yes. Sir, I wanted to understand how big will be the scale of the new laminate plant, which is expected to be operationalized by Q2 FY25, and what will be the target user base? Not Q2. Q3 end. Okay. We never say 2. Again, there is already place, heavy machinery order, leveling is going on, everything. Maybe within 2 weeks we will start the construction part also. All government, mostly government send already legal formalities with us. Okay, sir. And you have already mentioned that it will be used for exports. But do we have any idea that domestic will be the customer be from contract manufacturing? Yes, already. That is a different sizes, different things. We will get immediately sale from that. Okay, so that will be primarily through contract manufacturing and not our own label, right? No. Same 50-50. Okay. Right now we are doing the same thing. And sir, just my last question from my side. Will this plant be completely focused on laminates, or we will keep some line parcel for future capex as well, or something like particle? No need any capex after that. We are utilizing whole thing. Maybe it is a more value addition product we will produce here. Okay, so what is the size of the capex, like in terms of revenue terms, if you can quantify, in terms of the current capacity, so that we can... Current capacity, our target is we have a revenue almost 200 crore, 225 crore total plant. And total capacity will be minimum 800 crore. But I don't know, it will 2 years take, 3 years take to utilize the whole capacity. Okay, sir. That's it from my side. Thank you so much. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Kunal from Kitara Capital. Please go ahead. Hi, sir. Am I audible? Yes, Mr. Kunal. Sir, wanted to know outlook for solid acrylic surface. Hello? Not hearing you properly. I just wanted to check how is solid acrylic surface business going? Yes. It is actually, again, it is growing. Not like where we started export, like in US, in other countries. Now the fact of this Red Sea. Nobody wants to give laminates. Of course, we are number one, so the reason they are paying the ocean freight. Now it is in domestic also we increase little bit. Now we are hopeful that there will be anti-dumping very soon. Government already, China and this Korea is dumping there in India. Too much import from China now. So how much revenue do you expect from the business in the next 2-3 years? No, 2-3 years, nobody knows. We are quite hopeful it should very soon. We can get 200-300 crore business from it. Machines are ready, everything is capacity is there. Whenever anybody visit from US, any country, they appreciate the things. But we are quite hopeful that very soon it will be. Both the lines are operational or one of them is operational? One. We have no much order. So second is not utilized. We are utilizing capacity only 10%, not more than even 10%. Is it because you're not getting orders or? Yes, or not getting orders. Okay. Fine. Thank you. The next question is from the line of Viraj Parekh from Carnelian Asset Advisors. Please go ahead. Thank you for the opportunity. Am I audible, sir? Yes. Yeah, so just wanted to understand a follow-up on the previous question. I mean, हम लोग सर acrylic का line तो अभी
पहला line बहुत time से लगा के रखा है, sir. I mean, now what are we trying? Like we are seeing we're not getting orders. So what is the plan to ramp up this capacity utilization? Because line 2 भी लगा के रखा है, line 1 10% capacity पे है. देखो ऐसे है ना, if we actually go through our past history of laminates even, at least we are not at losses from acrylic. But when we start our laminates in 92, 93, we suffered almost 15 years. If you go through our total old balance sheet, we have suffered so many losses, so many things. Even that HPL was already available in India, so many factories. Even then it took so many years. But acrylic, we are first company in India to start with Europe technology with the same. So when you want to build your own brand name, it takes many. If we want to sell it as an OEM to anywhere in India, we can sell it easily. We don't want to go that way. We want to have more patience that our Granex brand should be established. This is the reason for the more delay and not getting immediately. We want to build our brand name. Like people China से मंगाते हैं वो OEM करते हैं यहाँ. We don't want to sell like OEM. Whatever we are selling in our acrylic, whichever, it is 100% our own brand name, even overseas. We are quite hopeful very soon, expecting every week, every day, thinking about these things. Understood, sir. Just one thing, if you can help me understand, the 9 months of FY24, how much of revenue have we earned from acrylic, and can you split that up in export and in domestic? Just told you. 5,300 बैलेंस शीट है, 537 लाख. Yes. हाँ जी, 537 लाख सेल. No, our sale is 5.37. approximately 4 crore. 4 crore for 9 months, sir? 5.37 crore. 9 months. हाँ जी. हाँ, yes, for 9 months. नहीं, third quarter. No, third quarter. Sorry, it is third quarter. Okay, 5.37 crore for the third quarter. And sir, total for the 9 months, how much is it? Total is almost 20 crore. 20 crore. And sir, can you split this 20 crore in export and domestic? Export, domestic. Domestic is almost 11 crore. Okay. Export is almost 9 point something, 8 point something. Understood. So this question on this only, going ahead, it's been quite a number of years that we have tried and tested the export and domestic market. Only 2 years. We started it after COVID actually. Correct, sir, correct. It's been 2 years since we, commercialized the first laminate line. So just wanted to understand, in these 2 years of your experience in the market, where do you think your next year would be concentrated focusing on? Would it be the export market or would it be the domestic market? No, domestic market is also very big. We started with, it is mostly for domestic, but export market is also big. Because only China and Korea is catering the whole of the world. This was our reason. I told you, if we want to sell it to OEM, we can sell it easily. But what is the problem we are facing is to make our brand name. Even if you go to India market, if you ask, everybody know Granex now. Understood, sir. No, my question is from the point of view, not that the opportunity is big, but where would you concentrate more of your efforts on? Do you want to focus to first establish Granex as a domestic brand and then take it global? Or do you want to see that global is much more easier to build than domestic? No. Both are, for us, both are the same. But I'm sure it will not be like HPL in India we are doing. It will grow more in India, domestic market. It is export substitute. Still there is a 700 to 800 crore import from Korea and China in India every year. And government is already started initial this anti-dumping duty on this. This will also help us. Just started 2 weeks back.
Sorry, sir, could you repeat the last thing? Government said import duty. Government has initiated anti-dumping. Government has initiated the anti-dumping duty. It has been published in the Gazette also. So more or less in the next 1 year, anti-dumping will be implemented. If it is implemented, we don't know, but then it will be a great help to us to curb this import which they are dumping in India. Understood. So last two questions before I get up in queue. So earlier a participant asked that about the freight impact versus the Red Sea. You're saying as of now you've not passed on to the customer. You are taking some of the hits on your margins. Like that's not fully passed on. Yes. So when something start immediately, if you have an order for 2 months and something immediately happen, then that you have to pay from your own pocket for few days or few months. You cannot. But now the new orders are coming with, it is coming with surcharge, with ocean freight. It is already absorbed in last quarter balance sheet. In spite of that, our margin is this. Yeah, so my actually question was that हम लोग already 22% margin पे तो है. So is there like आप बोल रहे हो कि raw material cost is more or less stabilized right now. So as we pass on this cost to the customer fully, is there scope for the margin to improve going ahead? At least that I cannot really confirm right now, but I am sure it will not decrease. It will be, we are trying to maintain it. Sure. So this last question is, last quarter we did sales volume of 3.15, this quarter 2.8. If you could give a breakup of that last quarter and this quarter in domestic and export volume. Madam? Q2 और Q3 का domestic और export volume का sale volume breakup दे सकते हैं आपको? हाँ, Q3 का लिखिए. Domestic में 12.86. Domestic में 12.06. 12.86. Sorry, आपका आवाज is very muffled. I can't hear you. 12.86. Okay. और 15.17 export का. Okay, and the last quarter Q2? Q2 में था 15.47 domestic. 15.47 और 15.98 था export से. 15.9. Okay, sir. Thank you so much. I'll get back to you. Okay. Thank you. The next question is from the line of Ritesh Shah from Investec. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the opportunity. Sir, couple of questions. First is, sir, acrylic as a product. Sir, आप जब ये प्रोडक्ट पे आप जब गिनती करते हो तब आप इसको मीटर और थिकनेस पे देखते हो या फिर आप किलो पे देखते हो? Per sheet. It is on per sheet. Per sheet by 760 mm by 3660 mm. Okay. सर सेकेंडली आपने बताया कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो प्रपोजल गया है ये सिर्फ चाइना के लिए है या फिर और कोई कंट्रीज भी? मोस्टली चाइना ही डैमेज करता है ज्यादा. ओके. चाइना से ज्यादा. ओके. सर जहाँ तक हमें समझ में आता है ये जो इनपुट हो रहे हैं वो अलग अलग नामों से आते हैं, यानी मॉन्टेली शीट है, मैक्स एक्रेलिक शीट है, पीएमएमए है वगैरह वगैरह. तो सर ये जो एंटी डंपिंग जो अगर लागू होता है तो इज इट ऑन अ पर्टिकुलर एचएसएन कोड? एचएस कोड पे ही होता है जो मगर एक्रेलिक आता है ना, जितना भी इम्पोर्ट होता है दैट इज अंडर वन एचएस कोड ओनली. कोई वैसे अंडर डिक्लेयर करके गलत काम कर रहा है कोई, दैट वी कैन नॉट से, बट अदरवाइज इट इज अंडर वन हेड. ओके सर टू माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक ये अलग अलग 3920 सीरीज में भी आता है, 3921 में भी आता है, 350 मे बी यू नो वेरी गुड आपकी स्टडी की हुई है. आई थिंक अवर जो सॉलिड सरफेस है इट इज कमिंग ओनली अंडर वन हेड ओनली. थिकनेस साइज भी आएगा सर ना? थिकनेस से हेड नहीं बदलता. जो हमारी डंपिंग लगेगी बराबर तक लगेगा. हाँ सर, मैं वो समझना चाहता था कि सर ये जो एंटी डंपिंग जो प्रपोज है वो बेसिकली इज इट फॉर अ पर्टिकुलर एचएसएन कोड, पर्टिकुलर थिकनेस, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ओवर हियर? एचएस कोड के बारे में तो आपने अवेयरनेस दिलाई है. मेरे माय ओपिनियन एक प्रोडक्ट के 2 एचएस कोड नहीं होते. कोई अंडर डिक्लेयर कर रहा है, रॉन्ग डिक्लेरेशन कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट इशू. लाइक अवर लैमिनेट्स
Now, thickness wise, yes, it is initiating thickness. That is okay from, because it is 6 to 12. 6 mm is also sellable. 12 is also now. So it is initiated to thickness 6 to 12 mm. Okay. And sir, any specific composition जो propose हुआ है? No, हमें इतना देखो, we don't know too much about this. We just send a request with the data that this is happening in this product. Correct. Okay. Anything next quarter में बता देंगे आपको. Correct. Sir, secondly, acrylic market India में सर कैसे देखना चाहिए? देखो ऐसे ना, मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ रही है. जो कोई चीज भी नई शुरू होती है, पहले अगर आप आज से 2-3 साल पहले निकालोगे 800-900 रुपए फुट सेलेबल था, अब 400 पे आ गया. एट दैट टाइम द प्रॉफिट मार्जिन टू हाई इंपोर्ट में. अब जैसे जैसे उनको लगने लग गया भी इंडिया में एक, हम उनका कंपटीटर तो हो ही गए ना इन दोनों के. पहले तो इंडिया में कोई एक्सक्लूसिवनेस होती थी, जो भी मंगाता था इंपोर्ट करता था. तो मार्केट बहुत बढ़ रही है इसकी. यूएस टू कम बढ़ेगी. और ओके. सर कोई जाने माने प्लेयर्स है मार्केट में, या फिर वी आर द फर्स्ट प्लेयर्स, फर्स्ट कंपनी टू एक्चुअली पुट अप अ फैसिलिटी एंड टारगेट द लोकल मार्केट? फॉर दिस यस, सॉलिड सरफेस में एक्रेलिक, प्योर एक्रेलिक में वी आर द ओनली कंपनी. प्योर एक्रेलिक में ओके. छोटी छोटी है कुछ चाइनीज मशीनरी के साथ, अब बहुत लाइन्स आर फ्रॉम यूरोप. ओके. ओके. And sir, just one last question, sir. On the paper, basically for laminates, ये हम कहाँ से import करते हैं और यहाँ पे pricing trend कैसा है sir? नहीं, हम तो मोस्टली पेपर यूरोप से आता है. जर्मनी, स्पेन, इधर से. Some only few is coming from China also. Okay. And sir, यहाँ पे trend कैसा है sir? Like India market is growing. Still? नहीं सर, प्राइसिंग ट्रेंड सर, पेपर का दाम नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड आप किस टाइप के पेपर की बात कर रहे हैं? देयर इज 2 टाइप पेपर, वन इज क्राफ्ट पेपर, सेकंड इज दिस डिजाइन पेपर. डिजाइन पेपर वी आर इंपोर्टिंग, क्राफ्ट पेपर वी आर बाइंग फ्रॉम इंडिया. ओके. सर्दी में जैसे विंटर में ड्यू टू वेस्ट प्राइसेस इंक्रीज, लिटिल बिट इंक्रीज है जाती है. ना ये चलता ही रहता है कि 2-4-5% इतना अब नॉर्मल चीज ना हो कोई, ना अब नॉर्मल डाउन होना चाहिए, ना अब नॉर्मल वेरी हाई होना चाहिए. दोनों ही डैमेजिंग है. 2-3-4% प्लस माइनस होता ही रहेगा. स्टेबिलिटी कभी नहीं हो सकती. ओके. सर, सो माय क्वेश्चन वाज कि हम जब ये पेपर इंपोर्ट करते हैं, हम वापस उसको बना के लैमिनेट बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई टैक्स एंगल है क्या? नो इम्पोर्ट ड्यूटी है? टैक्सेस आर नेवर एक्सपोर्टेड. इफ वी want to export any product and all raw material we can import duty free. Okay, so we are taking that benefit. Every company, not we, not laminates only, any product which you want to export, you can import that raw material duty free. Okay, fine. Thank you so much, sir. Thank you for answering all the questions. All the best, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Deepak Lalwani from Unifi Capital. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity. Sir, just wanted to confirm, you mentioned that if not for the Israel situation, your revenues and exports would have been up by 18 to 20 crores for this quarter, right? Right. Okay. So has this been, postponed, the shipments have been postponed to Q4? और no, now it is, I am quite hopeful, but not. अब जैसे वार भी ना, वहाँ कोल्ड वार होती जा रही है. जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की वार, पहले बहुत ज्यादा इफेक्ट था. एवरी टीवी फुल विद वार. नाउ इट इज ए कोल्ड वार. सेम थिंग हैपनिंग इन पैलेस्टीन एंड इजराइल. अब बातें होती रहती हैं. वी हैव एजेंट इन इजराइल. होपफुली वेरी सून the life will be normal. Whether they will, fighting is going on and off, but we are hopeful that coming month business will rather grow there. They will rebuild everything which is damaged by war.
ओके। बट सर ये इसका मतलब हमारे ऑर्डर्स कैंसिल नहीं हुए, बस डिले। ऑर्डर आई नहीं ना, ये कैंसिल किया जब इतना, तो वहाँ कोई फ्लाइटें अब शुरू हो गई है, इंडिया से तो बंद ही होगी। यूरोप की 3 महीने कोई फ्लाइट ही नहीं थी, अब वहाँ फ्लाइट दे ऑलरेडी स्टार्ट द फ्लाइट टू यूरोप। इंडिया की देखते हैं, कब ये एयर इंडिया जाती थी वो भी बंद हो गई थी, कोई टूरिस्ट बंद हो गए, सब कुछ अब स्लोली 2-3 महीने में लग रहा है सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जो रोज वहाँ बात होती है। ओके, राइट, गॉट इट। एंड सर आपने बोला कि एक्सपोर्ट मार्केट मतलब इज ग्रोइंग, राइट? सो इन विच रीजन्स, इफ यू कैन मेंशन दैट? एवरीवेयर ऑलमोस्ट। अगर हमारा देखो, इन स्पाइट ऑफ द स्लो डाउन भी इतना है, तब भी हमारा रेवेन्यू वहाँ से ठीक आ रहा है, एवरीवेयर ही ग्रो हो रहा है। सर कोई रीजन स्पेसिफिक ये ट्रेंड देख रहे हैं आप? जैसे यूएस भी काफी बढ़ रहा है इधर, यूरोप में इवन ड्यू टू मच स्लो, जर्मनी में इवन देन वी आर गेटिंग नॉट इम्प्रूविंग, सेल जो बढ़नी चाहिए, पर इतना लॉस नहीं हो रहा वहाँ, वी आर गेटिंग। ओके, श्योर। एंड सर ये इज दिस बैक्ड बाय एंड डिमांड व्हिच इज इंक्रीजिंग फॉर लैमिनेट्स, और मतलब और यू आर गेनिंग सम मार्केट शेयर फ्रॉम अदर players in the market? No, market is also growing. We are getting unorganized share also. Sure, got it. And sir, जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस घटे हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, आर वी पासिंग ऑन दिस थ्रू लोअर रियलाइजेशन इन? थोड़ा ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब इतने बड़े थे, हमने क्या बढ़ाए थे, उन्होंने बढ़ने नहीं दिए थे, इस टाइप से अभी कोई रेट इतने नहीं कम हुए। अगर कोई चीज 10 गुना बढ़ जाती है तो 2 गुना कम हो जाती है, उसको हम कम नहीं कह सकते, कि उस लेवल पे नहीं आई जो प्री कोविड के लेवल की। जी, तो दे अंडरस्टैंड, नोबडी इज आस्किंग अस टू रिड्यूस, फ्रॉम लिटिल रिड्यूस, दैट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, कभी इंक्रीज हो गया कभी। I asked this question because if I look at your domestic realization, it's down almost 12-13% on a year-on-year basis. So, is there any impact? मैंने कहा जहाँ आपकी कमांड होती है, we are weak in domestic market. We are trying to gain it. For this reason, realization is less. Where if you go to export, our realization will be, in spite of these facts, it will be more. Sure, got it. So if you can, give a sense on domestic, आप अगर next year revamp करने का सोच रहे हैं, तो any strategic initiative that you're taking? अभी तक तो खुद समझ नहीं लग रही, कोई लेंगे कंसल्टेंट, कोई बड़ा कोई और जो गाइड करेगा भी how should we improve when we are fully, every country of the world knows Stylam, why not India? हमें तो खुद नहीं समझ लग रही। We will think how we will do it. Surely it will be done. क्योंकि ऐसे होता है ना, क्वालिटी अच्छी ना हो, प्राइस बहुत गलत हो, वर्ल्ड में नया प्लांट लगा रहे हैं, इट विल बी वर्ल्ड बेस्ट। नाउ वी थिंक इट इज अवर इज ए सेकंड वन आफ्टर यूएसए। आफ्टर दिस न्यू प्लांट, आर्किटेक्ट सिंगापुर का आर्किटेक्ट है, जो आरएसपी जो इंडिया में ऑफिस है, वी आर डूइंग लाइक दिस, व्हाई वी आर नॉट गेनिंग मच इन डोमेस्टिक मार्केट? So we are more serious thinking about this. Sure, got it. And sir, my last question was on the Red Sea impact. So firstly, on the revenues, any shipment delays have we seen? वो हो चुका, अब जो तो इसका इफेक्ट पड़ना था वो इसको जो क्वार्टर की हम कर रहे हैं हो चुका। तो people are habitual, everyone understand in the world, they start paying the ocean freight. Okay, got it. So freight and it is a temporarily, it will not go permanently. Right. I'm asking from a revenue standpoint. So revenue का कोई भी delay हुआ है? अब don't think so. अगर कोई मान लो कोई कस्टमर नहीं भी मानता, थोड़ा मोटा 100% जीरो तो नहीं देता वो, अगर थोड़ा सा कम दे देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने बड़े वॉल्यूम में नहीं, no much matter. Sure. So if you can indicate मतलब how the January month has been, मतलब वो recovery शुरू हुई है? हाँ, कोई इतना बैड नहीं है, वो लास्ट ईयर जितना चल रहा है। Okay, got it. And sir, in terms of procurement of raw material, उसके लिए जो freight लगता है,
is that going to be? अनफॉर्चुनेटली वो इतना नहीं बढ़ा, इम्पोर्ट में इतना इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये हो सकता है लोग तो कहते हैं कार्टेल भी है इनका, क्योंकि इतना बढ़ने का चांस नहीं था। दे टेक इट ए अपॉर्चुनिटी गेटिंग आउट ऑफ दिस। श्योर, गॉट इट। एंड सर, जो हमारा केपेक्स होगा, इफ यू कैन गिव अ सेंस कि उसका फंडिंग हम कैसे करेंगे, कितना केपेक्स होगा? पिछली दफा भी कहा था, वी आर नॉट, नो नीड टू, वी आर ऑलरेडी, वी हैव ए सो मेनी ऑलमोस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट ये है हमारे पास। वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टर्म लोन, नो नीड। Okay. Sure, sir. Got it. And what will be the CapEx investment? 200 to 200, 200, 225 in between. Sure, sir. Thank you. Those are my questions. Thank you. The next question is from the line of Aditya Pal from Motilal Oswal. Please go ahead. हेलो, am I audible? Yes, Mr. Aditya. Yeah, thank you. So मेरे को बस यही जानने का था कि यूएस एंड मेक्सिको मार्केट, यूएस काफी अच्छा। हेलो। हाँ, तो मेरे को यही जानना था कि यूएस एंड मेक्सिको मार्केट काफी अच्छा बढ़ा है हमारे लिए FY23 में। आपको क्या लगता है 2-3 साल में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये हमारे लिए? कहाँ यूएस? यस सर। No, बढ़ रहा है हमारा। If you go through the data, it is increasing. I cannot disclose now to whom we are already in touch with and who is buying from us. So surely it will increase. Understood. But कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है? बहुत बड़ी है। US is a very big market for this. It can be as large as Europe revenues? Sorry? ये यूरोप जितना बड़ा हो सकता है हमारे लिए? नहीं, हमारा 10-15 करोड़ और बढ़ सकता है ना जी, पर मंथ। अच्छा। And so just to double click on the domestic part, any activity we are doing to increase our distribution, marketing? वो काफी कर रहे हैं जी, उसका कोई मतलब बहुत ज्यादा बरीड भी रहते हैं। ट्राइंग अवर बेस्ट। वी आई टोल्ड लास्ट दिस गाय आल्सो दैट व्हेन वी आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड एंड अवर ब्रांड नेम इज एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड, व्हाई नॉट वी आर नॉट टेकिंग इट इन इंडिया मार्केट। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। आई एम क्वाइट होपफुल दैट नेक्स्ट ईयर विल बी मोर पॉजिटिव अबाउट दिस। So best of luck. Thank you very much. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Keshav Lahoti from HDFC Securities. Please go ahead. Hi. Thank you for the opportunity. So congrats on delivering all-time high EBITDA margin. So you want to understand on CapEx size. CapEx, the amount you highlighted is 200 to 225 crore, while I remember earlier the CapEx was supposed to be 150 crore. So what is the reason for increasing CapEx size? No, 150 ऐसे ना, सबसे पहले तो एक्चुअली ये चलते हैं ना, जब प्लांट लगता है। वी हैव 3 presses, मे बी नाउ वी आर गोइंग फॉर 4 presses. दिस इज आल्सो रीजन। पहले वो हमने उसको भी कहा, बट वी हैव ऑलमोस्ट दीज फंड्स आर रेडी विद अस। जितना भी इसको ब्यूटिफिकेशन वाइज, ऑटोमेशन वाइज, जैसे जैसे आप करते हो, देयर आर मेनी न्यू थिंग्स आर कमिंग व्हेन यू स्टार्ट इट। Okay. कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। वो तो एंड में जब कोई पूछता है कितना लगेगा, 200 हो सकता है 190 में हो जाए, हो सकता है 210 में हो जाए। इट इज जस्ट स्टार्टेड। Understood. Got it. How would be the CapEx split? ये 24 और 25 में कितना होगा? 24 चाहिए नहीं, वो तो ना, उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं है। व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड। मार्च तक कितना हो जाएगा? अच्छा, यू आर सॉरी अगेन। ये साल कितना होगा? ये साल तो कुछ ज्यादा नहीं होगा ना, हमने मशीनरी का एडवांस दिया 10-15 करोड़। अब बिल्डिंग बन रही है, 10-15 करोड़ और लग जाएगा। बाकी मेन तो जाके नेक्स्ट में शुरू होगा, क्वार्टर फर्स्ट में। ओके समझ गई। और ये सर, ये जो न्यू प्लांट बना रहे हो आप, ये इसमें लार्जर साइज लैमिनेट्स बना रहे हो, तो इट्स अ मोर लाइक अ न्यू प्रोडक्ट
तो ये सोचना सही रहेगा कि it will be easy to ramp up this plant, and secondly you might have some visibility from OEM side also कि ये larger laminates बनाओगे तो शायद आपका ramp up बहुत easy होगा जब ये plant आ जाएगा। नहीं, ये तो ऑलरेडी ये हम नया कोई वर्ल्ड में है, इसकी 2 मशीन 2 कंपनी बनाती हैं, मार्केट इज देयर, वी विल गेट अवर कस्टमर इज ऑलरेडी बाइंग एंड दिस लाइक ग्लास में लगा लो आप, कितने बड़े बड़े, जब पहले होता था कोई 10 फुट का लगाता था, कोई 4 फुट 8 फुट का, 20 फुट लगने लग गया। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए साइजेस, तो इसका हमें इस प्लांट का अगर इफ वी गो टू MDF प्लाईवुड देन वी हैव समथिंग इन माइंड। इसके लिए हमें कोई सेल की वी हैव नो वरी एट ऑल। अंडरस्टूड, दैट इज गुड टू हियर। तो ये बताइए, ये जो एक्रेलिक में चाइनीज और चाइना और कोरियन डंप कर रहे हैं, तो कितने लोअर प्राइस में डंप करते हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना आएगा कि मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी आने से जो प्रॉब्लम सॉल्व डंप करने का पता है भी हमारे से 15-20% मिनिमम कम करते हैं। एंटी डंपिंग की कितनी आएगी हमें तो आएगी नहीं आएगी, हमें डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, तो गवर्नमेंट ही करेगी। पर गवर्नमेंट अगर कुछ स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है, दे अंडरस्टैंड देयर इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सही बात है, नहीं तो शुरू ही नहीं होती, नहीं तो रिजेक्ट ही कर देते वो। फेयर पॉइंट। सर ये एक चीज बताइए, जैसे कि आपका एक्रेलिक अभी 10% यूटिलाइजेशन में है। सॉरी, अभी आपका एक्रेलिक 10% यूटिलाइजेशन में चल रहा है, काफी कम यूटिलाइजेशन है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट में मार्जिन बना रहे हो, जबकि फॉरेन में बड़े एक्रेलिक प्लेयर भी है, तो नहीं बहुत सारा प्लेयर नहीं है, ओनली कोरिया एंड चाइना, और तो वर्ल्ड में बहुत कहीं प्लांट ही नहीं है। ओके, तो मेरे को इतना श्योर है ये हमारा ये स्टार्टिंग में लगता है क्योंकि न्यू प्लांट है, न्यू प्रोडक्ट फॉर इंडियन मार्केट, तो हमने कोई इतनी इसकी वी हैव नो वरी अबाउट दैट, वी आर नॉट एट लॉसेज इवन ऑन दिस सेल। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। तो ये जो डोमेस्टिक में जैसे कि अपना ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो एज यू करेक्टली हाईलाइटेड, क्वालिटी इज, Stylam is on par with other industry leaders. But what is the thought on the ad side, where possibly the others are spending heavy on ads? So that could be a reason why Stylam. Sorry, again. So as you correctly highlighted in call, Stylam quality is on par with other players in laminate industry. Yes. My question is, what is the thought on spending on ads in domestic side? Because others are going aggressive on that side. No, that is not a problem. That is not, we can also go. But when we have a no much network, वो आपकी वो ad भी flop हो जाती है। We already have a video, already spent 3 years back. जब हम आज इसको जब नेटवर्क इंडिया का हम नेटवर्क बनाने पे लगे हुए हैं, then it will be otherwise if somebody goes in any city of the India and their product is not available, then वो आपकी एड भी 0 हो जाएगी। Perfect. So the idea is we are doing our best every day, worried about that. Okay sir, understood sir, thank you, that's it from my side. Thank you. The next question is from the line of Alisha Mahwala from Envision Capital. Please go ahead. Hi sir, good morning. हम एक 40 crore का केपेक्स कर रहे थे, which was more like brownfield, उससे हम थोड़ा कैपेसिटी। बहुत पुरानी बात हो गई, तो बीच में था ना वो ऑटो। वो हो गया। वो हो गया। अच्छा, वो इस साल में हो गया। 40 हुआ, 35 हुआ है, वो तो चलता रहता है ना। अच्छा, तो वो हो गया है, तब बस ये 200 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो ये डोमेस्टिक मार्केट पे जैसे आपने कहा कि थोड़ा ब्रांड एस्टैब्लिश करने में समय लग रहा है, तो ये जो नई कैपेसिटी आएगी विल बी एट सम पॉइंट हैव ओवर कैपेसिटी, क्योंकि ये मार्केट को ग्रो करने थोड़ा समय लग रहा है। वो ऐसे ना, तो हमने एक्रेलिक का कहा है, HPL का नहीं कहा। मतलब जो नई कैपेसिटी आ रही है, दिस कैपेसिटी फॉर कम्पैक्ट लैमिनेट्स एंड डिफरेंट साइजेस, मार्केट इज ऑलरेडी देयर इन एक्सपोर्ट, so we don't think there will be any problem. ओके, डोमेस्टिक में आपको कैपेसिटी यूज करने के लिए वो जो बड़ा साइज आ रहा है वो एक्सपोर्ट में भी है, डोमेस्टिक में भी चलेगा। ओके, ठीक है। एंड सर, डोमेस्टिक मार्केट में एनी पर्टिकुलर
पॉकेट्स या मार्केट्स जो हमारे लिए ज्यादा पेन क्रिएट कर रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन ग्रोइंग? जैसे हम साउथ में स्ट्रॉन्ग थे, सो इज इट कि बाकी के मार्केट्स में थोड़ा समय लग रहा है? नहीं, कलर डोमेस्टिकली क्या कौन सा मार्केट इज वर्किंग एंड नॉट वर्किंग? नहीं, एक्चुअली इसका मेरे को ना आई हैव नो मच राइट आंसर कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट. मिल गया. So we are trying our best and quite hopeful that definitely very soon it will grow. ओके, सो एंड ये एक्रेलिक में हमारा सब 10% यूटिलाइजेशन है, तो आर वी ब्रेकिंग इवन देयर या? Yes, we have no loss क्योंकि सारी ऑटोमेशन मशीनरी है, नॉट मच कोई पावर ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बंदे नहीं है, वो बंदे उधर से ही काम हो जाते हैं, कोई मेंटेनेंस में कोई नहीं है ज्यादा, मशीन टोटली मशीन आर ऑटोमेटेड. ओके, एंड एक्सपोर्ट में एक्सेप्ट द ऑनगोइंग वॉर बाकी मार्केट्स में हमें कहीं पे कोई स्लो डाउन या कहीं नहीं? अब इजराइल और पैलेस्टीन से आ रहा है, थोड़ा सा रशिया में अभी भी आ रहा है ड्यू टू दिस लगने से, जो इनका बैन लगाए हुए हैं यूएस ने, उस वजह से. ओके, तो एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स वी फील कि एक्सपोर्ट का बिजनेस तो शुड कंटिन्यू टू डू द ग्रोथ जो देगा. डेफिनेटली. ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Nikhil Agarwal from VT Capital. Please go ahead. Good morning, sir, and thank you for the opportunity. Sir, raw material impact क्या था रेड सी? आई थिंक आई मिस्ड इट. आपने बोला था क्या इम्पैक्ट रहा है रेड सी के कारण, क्योंकि हम लोग मेजर चंक इम्पोर्ट भी करते रॉ मटेरियल. तो इस चीज का इफेक्ट वो तो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई है, प्राइस जितनी भी होनी है, जितनी डाउन होनी है डाउन हो गई ना. इसके बाद बढ़ने का तो मतलब ही नहीं, कोई डाउन होने का भी कोई लगता नहीं. डाउन चाहे हो जाए बढ़ेंगी नहीं लगता. अगर कोई अनफॉर्चुनेटली लाइक कोविड कोई ऐसा ही सी फ्रेट का फर्क पड़ जाए तब जाके बढ़ेंगे, अदरवाइज डोंट लुक्स लाइक दिस. अच्छा सर, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आपका Q3 में गिरा था, तो व्हाट वाज दिस लेड बाय? मतलब 150 बस अराउंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स गिरा था Q3 में, तो इसका क्या रीजन था? आई मीन ये कौन सा आपका रॉ मटेरियल, डेको पेपर, इसका दाम कम हुआ कि जो सबके कम हुए हैं स्लोली हर चीज के? अच्छा, एंड जैन फेब भी प्राइसेस आर मोस्टली स्टेबल, सो ग्रॉस मार्जिन ये लेवल पे रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए, पर नियर बाई रहेगा भी, इतना ड्रास्टिकली कोई बढ़ेगा भी, ड्रास्टिकली डाउन भी नहीं होगा. अच्छा ठीक है. अच्छा, फ्रेट कॉस्ट आपने क्या कहा था? आपने फ्रेट कॉस्ट का इम्पैक्ट खुद का पीएल पे लिया था क्या? वो ऐसे स्टार्ट होती है, यू हैव ए ऑर्डर टुडे, एकदम सडनली स्ट्राइक होगी रेड सी पे, नेक्स्ट डे उन्होंने ओशन फ्रेट बढ़ा दिए. जिनके आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किए हुए हैं, ही विल नॉट पे एनीथिंग टू यू, CIS किए हैं. सो फॉर दैट टेम्परेरी पीरियड वी पेड. नाउ एवरी न्यू ऑर्डर कमिंग विद एक्स्ट्रा चार्जेस. अच्छा, सबको, हमारे को नहीं, एवरी वन हैज ए सेम प्रॉब्लम. जब कम होते हैं तब भी कम नहीं करता कोई. अच्छा, डिमांड सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट में कैसा है? इट इज कुछ स्लो डाउन है Q3? थोड़ा सा स्लो डाउन है अपनी तरफ से, बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, पता नहीं क्या बात है, डेस्टिनी में लगा लो. हर जगह में भी आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट, इतने अच्छे आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में हमें कैन नॉट से. ठीक है, ओके सर, बस इतना ही सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Parikshit Kabra from Key Advisors LLP. Please go ahead. हेलो, थैंक यू सो मच. सर, मेरे को समझना था कि Q3 में अपना एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ है रेड सी के इशू से, वो मैं समझ लिया, बट Q2 में भी अपना एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था. तब तो सारी दुनिया का ही हुआ था, तब तो इतना स्लो डाउन आया हुआ था ना यूरोप में. जहाँ तक मुझे समझ में आया सर कि ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज का वो उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, वो लोग कहीं और एक्सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, मेरे को उनका, देखो मैं आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, दे हैव देयर ओन ऑफिसेज एवरीवेयर, वी आर नो ऑफिस. तो आप बोल रहे हो बारे में इस टाइप का मैं आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, आई डोंट नो. तो Q2 में ओनली मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड थे. हमें पता है वी आर डूइंग अवर बेस्ट एंड वी आर ग्रोइंग. हाँ, तो सर वो Q2 वाले जो हेडविंड थे, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड, अब वो खत्म हो गए हैं? कौन से जी? Q2 में आपने बोला एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुए थे. हाँ, हुए थे.
अब वो ऑलमोस्ट अभी भी कुछ लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है अब। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Chirag from White Pine. Please go ahead. Yes, sir. Thanks for the opportunity. Sir, my first question is a clarification on the anti-dumping. So you said the proposal has been given to government, right? तो ये उन्होंने इनिशिएट कर दी है, ये गजट नोटिफिकेशन हो गई है इनिशिएट करने की। अच्छा, इनिशिएट कर दिया, तो अभी फ्रॉम व्हेन इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड एंड नो नॉट इम्प्लीमेंटेड, दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, दे स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, ओके। पता नहीं वो लगती है नहीं लगती, पर जब जो पहले तो इतने सोच के इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं ना, नॉट भी किसी ने एप्लीकेशन ले दी दे विल स्टार्ट इट। बराबर, ओके। सो दिस इज वन। सर, सेकंड इज slightly different question before I come to, sir, now that you are looking to add 800 crores of new capacity and basically kind of doubling your revenue, so what are the changes that you are making internally in terms of your management bandwidth, senior and middle level management, so that you can scale up the exports as well as domestic business? If you can just talk a bit about it. जब भी कोई चीज ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली है ना, हर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे एडिशन तो होगी ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो एवरी डे वी डूइंग दैट। आई अंडरस्टैंड होगी, बट हर एक कंपनी की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होती है, तो वेयर आर यू लुकिंग टू ऐड मोर पीपल? वो हर जगह में आएंगे काम, वो तो एक आदमी कर ही नहीं सकता। हाँ, उतने नहीं आएंगे जितने प्रोपोर्शनेटली नहीं आते होते। इट विल नॉट कम डबल, देयर विल नॉट बी डबल। आप क्या सेल साइड पे ज्यादा देखने रहे हो या हमारे सेल में आ रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट में वैसे इतने ज्यादा चाहिए भी नहीं होते। If you are your own offices, you are doing that, then you need too many. Okay. Otherwise you don't need any. कितने दफा चले जाओगे किसी के कस्टमर को मिलने? और if you have 100 कस्टमर, साल में दो दफा ही मिलोगे उसको, या एक दफा। डेली तो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा ना एवरी मंथ। ना ओके, तो लेट मी रिफ्रेज। तो आप ओन ग्रीनलैंड जैसा अपना ओन ऑफिस रखता है, आप उस तरह का मॉडल आप नहीं सोच रहे हो? नहीं, हमने नहीं करना, वो तो उनको अपना। हाँ भाई, वही इसमें नहीं, हम नहीं करना, नहीं हमने कुछ नहीं करना, हम तो अपना जो मॉडल चल रहा है ना, दिस इज द बेस्ट वन फॉर अस। तो बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली इंडिया से बेचोगे एंड देन दे विल डू दी ऑनवर्ड सेल। पता नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर है, पता नहीं क्या करता है हमारा, उनके साथ भी हम वी आर नॉट गेटिंग व्हाट ही इज डूइंग। सम आर एंड यूजर, सम आर डिस्ट्रीब्यूटर, some are using their own name, some are using our Stylam brand. ओके, तो आप यही मॉडल देख रहे हो? यस। ग्रोथ साइड पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो स्टाइल है अपना अभी का, उसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत है? नहीं, होपफुली नॉट। हाँ, वही। ओके, तो दैट वाज वन। सर, सेकंड क्वेश्चन वाज, ये नया प्लांट में जब हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, विच यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग अप टू 20 फीट ऑल्सो लैमिनेट्स का, तो इज इट फंजिबल? अगर आपको चाहिए तो आप छोटा वाला लैमिनेट भी बना सकते हो साइज का? देखो, हम बना सकते हैं, पर नोट ऐसा नहीं है भी अगर कोई 7 फुट की उसमें 3-4 फुट का बना लो। इफ यू वांट टू गो 6 फीट देन इट्स ओके, 5 फीट इज ओके, नॉट लाइक भी इतना ज्यादा नहीं, देन मशीन विल बी डैमेज। ओके, तो ओके। एंड अगर आप छोटा साइज बनाओगे तो थोड़ा उसका मार्जिन पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, राइट? बिल्कुल है ही नहीं है, तो मशीनें छोटे साइज के लिए दूसरी है ना, बाई चांस कभी ऐसा आ जाता है, बहुत ऑर्डर आ जाते हैं, उधर ऑर्डर नहीं है, एवरीवन इज डूइंग दैट, तो टेक्निकल बात है, आना कभी आपको प्लांट दिखाएंगे। यस सर, आई वुड लाइक टू कम सर। यस, आना फिर आपको पता चल जाएगा कैसे बनते हैं। सर, सेकेंड इज, ईयू में अपने कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? मतलब विच कंट्री, विच प्लेयर, इफ यू कैन शेयर सम लाइट। क्या चीज कॉम्पिटिटर? हाँ, इंडियन ही है कंपटीशन में कि कैसा है? ऐसे ना वर्ल्ड में सारे कंपटीटर हर प्रोडक्ट में, हर कारों में, सब जगह हमारे कंपटीटर को जो इंडिया के अनऑर्गेनाइज है ना, वो कंपटीटर है हमारे, जो गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, बाहर जाके गलत प्रॉमिस करते हैं। बड़े देश का कंपटीटर होता ही नहीं कोई कंपटीशन। अगर आपको ग्रीन मरीनो, दे आर अवर हेल्दी कंपटीटर, नॉट बैड कंपटीटर। वो चलता रहता है बिजनेस में। हाँ, तो ओके, वो तो इंडियन हो गए। तो इज इट राइट टू मेक अ स्टेटमेंट दैट यूरोप में फॉर द यूरोप में तो प्लांट ही बहुत बंद हो रहे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर टू इंडिया। नो सर, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि यूरोप में
जिस तरह का डिमांड इंडिया से सर्विस हो रहा है, इंडिया चाइनीज या कोरियन या और कोई कंपटीशन है नहीं वहाँ पे, राइट? हमारे HPL में नहीं है। आपके HP, हाँ वही अपने वाले प्रोडक्ट में नहीं है, वही नहीं है। ओके, इंडियन भी है बेसिकली। मोस्टली चाइना के वो अनऑर्गेनाइज कंट्रियों में बेचता है, ज्यादा बड़ी कंट्री में बहुत कम पार्ट है उसका। और यूएस में भी यही ऐसे ही बोला जाएगा कि यूएस में दे लाइक इंडियन। ओके ओके ओके। I'm sorry to interrupt. May I request that you return to the question queue for follow-up questions, as there are several participants waiting for that. Okay. Yes. Thank you. The next question is from the line of Harsh Shah from Dalal and Broacha Stock Broking Private Limited. Please go ahead. थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, हमारा जो क्वार्टरली रन रेट है, अगर मैं 6 क्वार्टर देखूं तो वी हैव नॉट काइंड ऑफ क्रॉस द 240 odd crores. So do we have the kind of visibility for Q4 that we can surpass this? कुछ नहीं पता, देखो हम ये तो कैन यू थिंक दैट वी विल नॉट लाइक दैट इट शुड क्रॉस? वी आर डूइंग समथिंग, कोई ना कोई प्रॉब्लम और एडीसी की आ गई, ओशन ट्रेड लोग फिर भी they are quite hopeful भी 240 हो जाना चाहिए। Still doing good. January is good. Now 2 months still we have enough order. If कोई ऐसी there should not be any problem, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई नहीं, फिर भी अपनी तरफ से कोई लॉस मेकिंग प्रोपोर्शनेट को प्रपोजल नहीं है कोई। We will try that we can achieve this figure. Okay. And do you have the number for the number of dealers or distributors in the domestic market as of date? वो पता क्या है, जितने मर्जी कह लो, if you have 1,000 distributor or dealer selling 10 sheets, no matter, we want a quality. तो 200 भी बहुत है, 100 भी बहुत है। नहीं, आपका बात बराबर है, अपने को क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर से, बट एनी नंबर यू कैन गिव? मेरे को नंबर नहीं, आप नागपाल जी बाद में दे देंगे आपको, मैं शीश को बोल दूंगा, आपको दे देंगे। मैं तो सेपरेटली कॉल कर लीजिए, मैं जो चाहिए आपको दे देंगे। और अभी एक्सपोर्ट मार्केट में जो हमने बोला कि जो हमारा केपेक्स आएगा और एक्सपोर्ट में ऑलरेडी डिमांड है, तो आपके पास कुछ ऑर्डर बुक है क्या उसके लिए? जो बड़े साइज के तो इमीडिएटली अब 6 महीने पहले तो कोई देगा भी नहीं ना। जब when it is near to start, then we will ask our people to get order. They are already using this size, तो इमीडिएटली मिल जाएगा। नॉट भी 100% चल जाएगी, 10-15-20% कैपेसिटी इमीडिएटली यूटिलाइजेशन हो जाएगी। करेक्ट, बट ऑलरेडी आपके टॉक्स ओईएम के साथ चल रहे हैं फॉर दैट। वो तो है ही है ना, हमारे कस्टमर ऑलरेडी विच आर बाइंग फ्रॉम अस राइट नाउ, दे आर यूजिंग दिस साइज आल्सो, दे आर बाय नॉट ऑल, फ्यू, एंड दे आर दैट दिस साइज दे आर बाइंग फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके ओके, ठीक है, या थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Amit Kalyanpur from East India Securities. Please go ahead. Hi. Thanks. My questions have been answered. Sorry? My questions have been answered. Thanks. Thank you. Due to time constraint, that was the last question for today. I now hand the conference over to Mr. Ashish Poddar for closing comments. Over to you, sir. Yeah, thank you everyone for joining us today. If you have any unanswered questions, you can reach out to me or the CFO. Thank you so much and have a good day. Thank you very much. Thank you. On behalf of Systematics Institutional Equities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.